Hey everyone, welcome to my channel. So let's continue with the remaining part. In the previous video, we have seen the methods, how to remember the atomic number and how to calculate it. We have also related it with periodic table and revised most of the part. And now we are going to do with atomic and ionic radius. So we have discussed so many trends related to it, so this is going to be a very detailed and very important video, so keep watching. So in the S block elements, we have seen the density order. Similarly here also in two-way group elements also, there is a slight deviation in the density. The density of radium is greater than barium, and barium is greater than strontium, and strontium is greater than beryllium, beryllium greater than magnesium, magnesium greater than calcium. So when you discuss the trends, uh, there are so many questions framed on the basis of densities. Why magnesium is more denser than calcium? Why calcium is less denser than magnesium? Similarly, in 1A group elements also we have discussed that potassium is less denser than sodium. So let's see what is the reason. The reason is very simple, guys. The reason is that, as we have seen that in fourth period, if you check in fourth period, here sodium, potassium, here magnesium, and here calcium. So if you go down the group, what happens? If you go down the group, what happens? Its atomic radius increases, right? So if we discuss about density is what? Mass by volume. So this belongs to which period? It belongs to third period, and this belongs to fourth period. So since you know that first period consists of only s orbitals, and second period consists of s and p orbitals, and in third period also s and p, but in fourth period you can see that d orbitals are also available. So for potassium and calcium, d orbitals are also empty, vacant d orbitals are also available. So what happens? The volume increases. As their volume increases, what happens? Volume is inversely proportional to density. Volume increases means density decreases. As density decreases, so we can say that calcium is less denser than magnesium, and potassium is less denser than sodium. So because of this, there is a deflection. So let's discuss another thing related to the melting point and boiling point. Melting point and boiling point, if you check, melting point of two-way group elements is greater than melting point of 1A group elements. It is due to strong metallic bonds. Because of strong metallic bonds, the melting point of 2A is greater than 1A group. Order of melting point, if you see, beryllium is greater than calcium, greater than strontium, greater than barium, greater than magnesium. Magnesium and beryllium, they have magnesium has low melting point. Okay, lowest melting point is for magnesium among 2A, and highest melting point is for beryllium. So beryllium is having very high melting point due to variation in the crystal structure. It is showing such a deviation. And if you see that beryllium is more denser than magnesium and calcium, because beryllium is having an exceptionally smaller size, right? It is having smaller size and more charge. So we can say it is having more density. So radium, barium, strontium, then beryllium, then magnesium, then calcium. Talking about melting point, because of variation in crystal structure, melting point of beryllium is highest, and melting point of magnesium is lowest. Talking about boiling point of beryllium is greater than barium, greater than calcium, greater than strontium, greater than magnesium. This is slight deviation. Melting point and boiling points are not having same trends. Okay, this is because of this structure. If you see beryllium and magnesium, it is having HCP, calcium and strontium CCP, barium BCC. So that's why there is a slight deviation in the melting point. In the boiling point also there is a
deviation. Now let's talk about another thing, that is atomic and ionic radii. The atomic and ionic radii of alkaline earth metals are smaller than those of alkaline of the corresponding alkali metals in the same periods. This is due to increased nuclear charge in these elements. Within the group, the atomic and ionic radii increases with increase in atomic number. So, as we've discussed in the previous video, that as we go down the group, in a group, new electrons are added in new shells, right? New shells, electrons are added. When you move from beryllium to magnesium, there is an increment of 8 electrons, and from magnesium to calcium, more 8 electrons. From calcium to strontium, 18. Strontium to barium, 18. Barium to radium, 32 electrons. So there is a very high increase in the number of electrons. So new shells are added, because of that size increases. But if you compare between 1a and 2a, you will see that atomic radius of 1a is greater than 2a, and 2a is having less atomic radius or ionic radius. Because as you move from left to right in a period, what happens, the electrons are added into the same shell, so that's why there is no increase in atomic radius, rather there is a decrease in the atomic or ionic radius. Now let's talk about ionization potential or ionization enthalpy. So if you see ionization enthalpy, so and then if you see the ionization enthalpy, or if you check the ionization enthalpy, what you will find that the alkaline earth metals have low ionization enthalpy due to fairly large size of the atom. So ionization enthalpy of alkaline earth metals have low ionization enthalpies due to fairly large size of the atoms. But when you compare the ionization energy of 1a and 2a, 1a is having first ionization enthalpy. If you compare, 2a is more than 1a and 1a is less than 2a if you talk about first ionization enthalpy, because alkaline metals, they easily lose one electron and gain the octet configuration, stable noble gas configuration, no problem with that. But when you come to 2a group elements, they have 2 electrons to lose and get octet configuration. So first ionization enthalpy is fairly high, but second ionization enthalpy of 2a is very less. So that's why we can say that first ionization enthalpy of 2a is greater than 1a, but second ionization enthalpy of 2a is less than 1a, because 1a has already lost one electron and gained its octet configuration, and now it is very difficult to remove the electron from the octet configuration. Now let's talk about the alkaline earth metals have low ionization enthalpies due to fairly large size of the atoms. Since the atomic size increases down the group, their ionization enthalpy decreases. The first ionization enthalpy of the alkaline earth metals are higher than those of corresponding group 1 metals. It is interesting to note that the second ionization enthalpies of the alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals. It is interesting to note that the second ionization enthalpies of the alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkaline earth metals. So you might be finding difference in my voice because I'm suffering with cold. So please try to manage. The alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals. Yeah, we have discussed this. Now let's talk about hydration energy or hydration enthalpy. So if you see hydration enthalpy, alkaline earth metals, like alkali metal ions, the hydration enthalpies of alkaline earth metal ions decreases with increase in ionic size down the group. So hydration enthalpy depends upon the size. Smaller the size of the anion, greater is the ionization enthalpy. So down the group, if you move down the group, what happens? Atomic radius or ionic radius increases. So since size increases, so what happens? Hydration enthalpy decreases. So beryllium is having highest hydration enthalpy, then magnesium, then calcium, then strontium, then barium.
The hydration enthalpies of alkaline earth metals are larger than those of alkali metal ions. Thus, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of alkali metals. Example: MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2 6 water molecules and CaCl2 6 water molecules, while NaCl and KCl do not form such hydrates. Okay. The hydration enthalpies of alkaline earth metals ions are larger than those of alkali metal ions because of size. Thus, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड क्योंकि उनकी साइज़ छोटा है इसलिए क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, व्हेन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स. एग्जाम्पल अगर आप देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड वो कभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, CaCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. वैसे अगर आप NaCl कॉमन सॉल्ट और KCl को देखें तो उसमें क्या है, उसमें हाइड्रेटेड नहीं रहते बिकॉज उनका साइज़ बड़ा है ना, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी नहीं होती कि राइट. So hydration energies of 2A is greater than 1A group. So MgCl2 6 water molecules, CaCl2 6 water molecules, whereas NaCl and KCl are anhydrides without water molecules. Hydration enthalpies M plus 2 ions of 2A group are extensively hydrated to form hydrated ions of type MH2OX whole plus 2. M plus 2 plus X water molecules is given as to MH2X whole plus 2 plus energy. Hydration energy is inversely proportional to size of ion. So order अगर देखो तो B plus 2 greater than Mg plus 2 greater than Ca plus 2 greater than Sr plus 2 greater than Ba plus 2. BeCl2 4 water molecules, MgCl2 6 water molecules, CaCl2 6 water molecules, SrCl2 2 water molecules, BaCl2 2 water molecules. Hydration energies of 2A group is greater than 1A group. The ionic mobility or conductivities of their ions increase from BOH taken twice, BH2O taken twice whole plus 2 to BaH2O taken twice plus 2. अगर आप ionic mobility की बात करें, conductivity of these ions, तो जो BH2O X whole plus 2 to BaH2O whole X plus 2 due to larger size of B plus 2 aqueous. So जो B plus 2 है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है बिकॉज जब बेरिलियम आयोनिक फॉर्म में रहता है और पानी में रहता है तो उसका साइज़ छोटा है. सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल become friends, right? See, B plus 2 is small, water molecules are also small, so they will make friendship with small with small. So what happens, there will more water molecules will become friends of B plus 2. So it is difficult for B plus 2 to move forward, and because there are so many friends to take them along with them, so it's difficult. So conductivity of B plus 2 in water decreases because it is having high hydration energy. Whereas if you take Mg plus 2, Ca plus 2, Sr is plus 2 and Ba plus 2, since Ba plus 2 is having very large size, water molecules will not get attracted to it because it is bigger than them. So what happens, less water molecules will attract to Ba plus 2. So what happens, due to larger size of B plus 2, so what happens, अगर आप सिंगली अगर देखते हैं, लाइक आप अगर पानी में डाल के देखते हैं तो क्या होता है, जो B plus 2 है वो बड़ा हो जाता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. वेराज अगर आप B plus 2 को चेक करें तो उसमें क्या होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम आते हैं. तो अगर साइज़ देखें तो Ba plus 2 छोटा रहता है इन वाटर इन कम्पेयर टू B plus 2, राइट. सो लेट्स और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म्स में होता है. जैसे कि आप देखो MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, CaCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, वैसे NaCl KCl में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. स्ट्रोंशियम क्लोराइड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, BaCl2 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स in general are silvery white, lustrous and relatively soft but harder than alkali metals. Alkali metals बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थे, उनको आप नाइफ से ऐसे NaCl वो सोडियम मेटल को आप ऐसे नाइफ से कट कर सकते हैं आसानी से. whereas जो सिल्वरी वाइट, लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट एंड हार्डर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा हार्ड हैं अल्कली मेटल्स से. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू बी समवट ग्रेइश. तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये भी सिल्वरी वाइट है, लेकिन बेरिलियम अगर आप देखें और मैग्नीशियम देखें तो ये समवट ग्रेइश हैं, थोड़े ग्रेइश आते हैं. जैसे कि आप मैग्नीशियम रिबन देखा होगा तो मैग्नीशियम रिबन एकदम वाइट नहीं होता सिल्वर की तरह, थोड़ा सा ग्रेइश आता है.
The melting and boiling points of these metals are higher than the corresponding alkali metals to smaller size. तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये मेटल्स का ज़्यादा है इन कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनका साइज़ छोटा है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स से ज़्यादा है. हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपेयर करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि इनका साइज़ छोटा है. The trend is, however, not systematic because of the low ionization enthalpies. They are strongly electropositive in nature. So they're saying that alkaline earth metals are not having a regular trends of melting point and boiling point. Because of the low ionization enthalpies, they are strongly electropositive in nature. Because of the low ionization enthalpies, they are strongly electropositive in nature. The electropositive character increases down the group from beryllium to barium. Electropositive character increases because size increases, less screening effect, more easily electron can be donated. Talking about calcium, strontium, barium impart characteristic brick red, crimson and apple green colors respectively to the flame. So they usually ask the colors. So calcium जो है brick red color, bricks that is having natural color of calcium is brick red. When you see, they are silvery white when you take the metal, but when you expose them to the flame, so they emit the colors like brick red, strontium is crimson, barium is apple green. So this is in flame. What happens in flame? The electrons are excited to higher energy levels, and when they drop back to the ground state, energy is emitted in the form of visible light. So जब वो लोग if you see the metal, there is silvery white and magnesium and barium are somewhat grayish. But when you see the flame test, what you have to do, you have to take the metal and expose it to the flame. So what happens, some electrons will gain the energy and get excited to the higher energy levels, and when they drop back to the ground state, they emit light in the visible region. So what happens, we can see the colors like calcium is brick red. You see calcium is brick red, strontium is crimson, barium is apple green, barium is apple green, barium is apple green. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. So if you see, you might ask the question, why only calcium, strontium and barium? Why not beryllium and magnesium? The electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by flame. So they get excited by flame. They cannot get excited by flame because they're too strongly bound. Hence, these elements do not impart any color to the flame. The flame test for calcium, strontium, barium is helpful in their detection in qualitative analysis. Qualitative, whether you have to find out whether the compound contains calcium, strontium, barium, you have to expose it to flame photometry, and you can get the colors. Based on the colors, you can say that it is having calcium, if it is showing brick red, if it is crimson, it is strontium, if it is apple green, barium. So calcium is brick red, strontium is crimson, barium and apple green. So we usually get confused how to remember this. So let's make a mnemonic. Calcium brick red, calcium brick red, calcium brick red, calcium is brick red, strontium is crimson, barium apple green. Strontium crimson, strontium is crimson, strontium, calcium brick red, calcium is brick red, calcium is brick red, barium is apple green.
Barium is apple green. Strontium crimson. Crimson. Calcium brick red. So calcium. Okay, I have a mnemonic. We'll discuss this later. The alkaline earth metals, like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivities, which are typical characteristic of metals. So, if you see the alkaline earth metals, like those of alkali metals, have high electrical and thermal conductivities. So, the alkaline earth metals, like those of alkali metals, they have high electrical and thermal conductivities, which are typical characteristic of metals. So they have covered the points, but they did not discuss in detail about electropositivity, electronegativity. So let's discuss it. So electropositive nature, a metallic character, and reactivity of metals is same. That is beryllium less than magnesium, less than calcium, less than strontium, less than barium. So barium is most metallic, most electropositive, and most reactive. Alkaline earth metals do not exhibit photoelectric effect because इनका साइज छोटा है, so they won't give electron as easily as alkaline metals. Oxidation state is +2 only. In any compound like fluorine is having -1 in any compound. Similarly, alkali metals have +1 in any compound and +2 for alkaline earth metals. Talking about electronegativity, beryllium is most electronegative. Beryllium is most electronegative. It has tendency to take electrons from others. Magnesium, then calcium, then strontium, then barium, then radium. Okay, let's talk about conductivity. So they are good conductors of heat and electricity. Conductivity of 2A is greater than 1A. Conductivity of 2A is greater than 1A. I think it is because conductivity depends upon the number of free electrons, right? So alkali metals have only one electron in the valence shell, so they can conduct that one electron. But alkaline earth metals, they have two electrons in the valence shell, so they can conduct with the two electrons. So I think conductivity of 2A is greater than 1A. Flame test: beryllium and magnesium do not impart any color to oxidizing flame due to high ionization energy. Belongs to UV radiation. So only visible light can be sensed and visualized by our eyes. Okay, we can see visible light only, but beryllium and magnesium, they are strongly bound. So what happens, even though they give some color, it is beyond UV region, so we cannot see it. So because beryllium and magnesium, they are strongly bound and get excited by flame. Talking about calcium, it is brick red, strontium crimson red, barium apple green, and radium caramine red. So calcium क्या होता है? Brick red. Heat करने पर calcium, if you have seen, your teeth are made up of calcium and phosphorus. So when you heat it, they will become red, brick red. So strontium crimson red, and barium apple green. So reducing nature, alkaline earth metals have great tendency to release electron, hence they act as strong reducing agent. Down the group, reducing nature increases. If you see, beryllium is less than magnesium, less than calcium, less than strontium, less than barium. So if you compare their standard electrode potential, you can see that barium is a good reducing agent. Reducing nature means it reduces others and get oxidized. Getting oxidized means losing the electrons, so that is getting octate. Reducing power of 2A is less than reducing power of 1A due to high sublimation and ionization energy. Because when you talk about reducing nature, it is going to lose electron. To lose electron, gaseous state is most suitable. So sublimation means it will solid getting converted into gas, and gas then releases the electrons. So because of sublimation and ionization energy, high sublimation and ionization energy, 2A is less than 1A, reducing power. Okay, color and magnetic property. Divalent cations of 2A groups are colorless and diamagnetic due to absence of unpaired electrons. If the anion is colored, then the compound of M plus 2 is colored.
If anion is colored, then compound of M plus 2 is colored. Complex formation. Beryllium and magnesium can form complexes. If the anion is colored, then the compound of M plus 2 is colored. Complex formation. Beryllium and magnesium can form complexes. Beryllium and magnesium, they can form complexes. Uh, BF4 whole minus 2 and magnesium forms complex in chlorophyll, and beryllium form complex in BF4 minus with fluorine form complex. Okay, let's talk about another thing. Now let's go with chemical properties. So chemical properties. The alkaline earth metals are less reactive than the alkali metals. Alkaline earth metals come reactive with alkali metals. ऐसा क्यों है? Because the reactivity of these elements increases when going down the group. See, reactivity increases going down the group, and alkaline earth metals are less reactive than alkali metals. क्योंकि alkali metals they can easily because they have more reducing power. They have alkali metals. They are more reducing power. They have large size. They can easily lose the electron, so they are more reactive than alkaline earth metals. Reactivity towards air and water. So if you talk about reactivity with air and water, beryllium and magnesium are kinetically inert to oxygen and water because of the formation of an oxide film on the surface. However, powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give Bu and B3N2. So beryllium and magnesium, they are inert to oxygen and water because of the formation of an oxide film on their surface. They are chemically they do not react with oxygen and water because they form an oxide layer on their surface. Because of the oxide layer, only the upper surface will react and the remaining is unreacted, and so it is the remaining is safe, right? Talking about, however, powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give Bu and B3N2. But when it is powdered, what happens? It burns in air. It burns in air. It burns in air to give beryllium oxide and B3N2. Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give Mgu and Mg3N2. Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give Mgu and Mg3N2. Have you seen magnesium ribbon burning in air? So it's a very beautiful sparks it gives, and it's look very nice, dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitrate. So when you take the metal, it does not react. Okay, it is inert because of formation of oxide film. But when you keep it on fire, right? When you keep it on fire, then what happens? It burns and forms beryllium oxide and beryllium nitride, B3N2, and magnesium forms magnesium oxide and Mg3N2. Calcium and strontium and barium are readily attacked by air to form the oxide and nitride. But when you take calcium and strontium and barium, they take they attacked they get attacked by air because they do not form any oxide layer or oxide film. So what happens? They react with air and forms oxide and nitride. They also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxides. They also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxides, right? So they react with cold water also. So they also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxides. Have you seen when you throw some sodium metal in water, how it uh, how it pops and reacts with water? So if you have not, I will keep the link. You can watch it, or you can just search and watch it. So it is a very nice you can remember it. So when you throw a sodium metal in water, so what happens? It explodes.
uh, in NCERT also they have given reaction of with air and water. Activity towards water. The alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen. It may be noted that although lithium has most negative value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium, which has the least negative value among the alkali metals. This behavior of lithium is attributed to its small size and, and very high hydration energy. Other metals of the group react explosively with water. Other metals of the group react explosively with water. So they also react with proton donors, alcohol, gases, ammonia, and alkynes. But talking about alkaline earth metals, beryllium and magnesium, they do not react because they form an oxide flame. But when it comes to when you expose it to fire and then expose it to air, then beryllium oxide and beryllium nitride and magnesium ribbon burning you might have seen in your school. So it's a very beautiful burning, right? The activity towards the halogens. All the alkaline earth metals combine with halogen at elevated temperatures, forming their halides. At elevated temperatures, they react with halogens and form halides. How they form? M plus X2, they form MX2. X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. Thermal decomposition of NH4 taken twice BF4 is the best route for the preparation of BF2. So BF2 do not form easily, so because of that बहुत नाटक करता है BE. बेरिलियम का भी anomalous properties पढ़ेंगे. You can see कितने रखड़े हैं उसको, how it differs from the rest of the group members, and so on elevated temperatures they form alkyl halide, they form halides. But beryllium you can form from thermal decomposition of NH4 taken twice BeF4. This is the best route for the preparation of BeF2, and BeCl2 is conveniently made from the oxide, and BeF2 from thermal decomposition of NH4 taken twice BeF4. But for BeCl2 you can make it from its oxide. You have to take beryllium oxide and carbon and Cl2, then you will get BeCl2 and carbon monoxide. Carbon monoxide is a poisonous gas. It's very poisonous. It is it is colorless, odorless, and it can combine with our hemoglobin. It is 300 times. It is 300 times more it is 300 times more reactive than our oxygen. It has more affinity for hemoglobin than oxygen. It has 300 times more affinity for hemoglobin. 300 times more affinity. 300 times. So it can kill a human, right? So reactivity towards hydrogen. All the elements except beryllium combine with hydrogen upon heating to form hydrides, MH2. So beryllium is having so much attitude, it do not combine with hydrogen. So BH2 however can be prepared by the reaction of BCl2 with LiAlH4. But our scientists wants to prepare beryllium hydride. So how they'll prepare? They can be prepared by the reaction of BCl2 with lithium aluminum hydride. So if you take lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, so it's a very strong reducing agent. What it does, it gives its hydrogen to beryllium and plus lithium chloride plus AlCl3, okay, plus AlCl3. So I think we are going to conclude the chapter after a few more topics, talking about. So what happens here is beryllium hydride बनता नहीं है जल्दी, but scientists they want to make beryllium hydride. So what they do, they take beryllium chloride and react it with lithium aluminum hydride, and lithium aluminum hydride is very strong reducing agent. You have seen in organic chemistry it reduces even carboxylic acid into alcohols. So
it also reduce beryllium hydrate, beryllium chloride into beryllium hydride. So beryllium hydride is formed, and lithium chloride and AlCl3 is formed. So you can get aluminum chloride, lithium chloride, and but you'll get beryllium hydride. So let's talk about reactivity towards acids. The alkaline earth metals readily react with acids and liberate dihydrogen. So what happens here is, you have to take acid. The alkaline earth metals readily react with acids, liberating dihydrogen. So what happens is, you know, they react with acids. The alkaline earth metals readily react with acid, liberating dihydrogen. So whenever you take a metal and react it with strong acids like HCl and H2SO4, what will form? They will form hydrogen gas and a salt and hydrogen gas. So like MCl2 and H2 you will get. So it is same with the 1A group elements also, but they will form MCl like NaCl, KCl. And talking about magnesium and calcium, they get hydrated, right? MgCl to 6 water molecules, CaCl to 6 water molecules, strontium Cl to 2 water molecules, barium Cl2 2 water molecules, like that. Reducing nature we have already discussed, but still we'll see. Like alkali metals, the alkaline earth metals are strong reducing agent. This is indicated by large negative values of the reduction potential. So अगर आपका reduction potential बहुत ज़्यादा है metal का, इसका मतलब वो strong reducing agent है. Reduction potential मतलब their ability, right? Your ability. If you talk about your potential, means your ability. Reducing potential means how much capacity you have to reduce other element, right? What is the capacity of a metal to reduce other metal? It is the potential. Reduction potential. Reduction potential, right? Reduction potential. However, the reducing power less than that those of the corresponding alkali metals. Beryllium has less negative value. Beryllium का less negative value compared to alkaline earth metals. However, because beryllium is moreover it is electronegative, so it can't lose its electron more easily. And beryllium has less negative value compared to other alkaline earth metals. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of B+2 ion and relatively large value of the atomization enthalpy of the metal. So when you talk about beryllium, it's a marvelous. इसके बहुत नखरे हैं, right? beryllium hydride नहीं बना था, लेकिन साइंटिस्ट को बनाना था, तो उन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को इस रिएक्ट करवाया और इसको भी बेरिलियम हाइड्राइड बनाना पड़ा. किससे? बेरिलियम क्लोराइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रिएक्ट करवाया था. अब ऐसे ही हमें BF2 बनाना था, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया किसका? NH4 टेकन टॉइस BF4. NH4 टेकन टॉइस BF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से BF2 बन गया. BaCl2 बनाने के लिए आपको बेरिलियम ऑक्साइड लेना होगा, कार्बन और Cl2. फिर कार्बन इसको क्या कर देगा? रिड्यूस करके BaCl2 और एक पॉइजनस गैस निकालेगा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो जो रेड्यूसिंग नेचर है, वो रेड्यूसिंग नेचर बेरिलियम का क्यों है? बिकॉज ऑफ हाउ इट्स रेड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज hydration energy associated with small size of B+2 ion and relatively large value of the atomization enthalpy of metal. atomization enthalpy of the metal मतलब किसी भी मेटल को उसको एटम्स में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं atomization enthalpy. इसका atomization enthalpy ज़्यादा है, whereas इसका साइज़ बहुत छोटा है. और हाइड्रेशन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स अ स्मॉल साइज. लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया. देखो एक बात यहाँ पर देखें कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे हैलाइड्स बनते हैं. हैलाइड्स आर फॉर्म्ड इन एलिवेटेड टेम्परेचर्स. हैलाइड्स उतनी आसानी से नहीं बनते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर्स चाहिए होगा, मीन्स हाई टेम्परेचर्स यू नीड, राइट. और हमने देखा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल के फॉर्म में होता है तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक बार आप उसको इग्निशन दे दो, मीन्स थोड़ा सा फायर, थोड़ा सा आग दे दो, तो क्या कहते हैं, बर्न होके बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड बनाते हैं.
पाउडर्ड फॉर्म में आप उनको बर्न करो तो बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड बनता है, बेरिलियम राइट। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बेरिलियम से, and it burns with dazzling brilliance. Have you for that you should watch a burning of magnesium ribbon, so it looks very beautiful. Let's talk about solutions in liquid ammonia. So ये हमने वन अल्कलाइन में भी करा था, अल्कलाइन मेटल्स में. So like alkali metals, the alkaline earth metals dissolve in liquid ammonia to give deep blue black solution forming ammoniated ions. So यहाँ पे deep blue black solution बनेगा, that is because of ammoniated electrons. So because of ammoniated electrons, because of what? Because of ammoniated electrons, because of ammoniated electrons. So ammoniated electrons जो होते हैं जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी वजह से डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है. कौन सा कलर? डीप ब्लू ब्लैक कलर, डीप ब्लू ब्लैक कलर, डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है. विच कलर? डीप ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड electrons. Because of ammoniated electrons it gives deep blue black color, right? So because of ammoniated electrons it gives deep blue black color. और जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो बिकॉज ऑफ एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास डीप ब्लू ब्लैक कलर आता है. तो उसका रिएक्शन देखना, m प्लस x प्लस y NH3 गिव राइज टू MnH3x होल प्लस 2 EnH3 taken y times whole minus. So from these solutions the ammoniates MnH3 taken 6 whole plus 2 can be recovered. तो इस सोल्यूशन से आप ammoniates can be recovered. From these solutions the ammoniates can be recovered, so you can remove the ammoniates. Okay, solution of metal in liquid ammonia. जो 2A ग्रुप एलिमेंट्स हैं डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म कलर्ड सोल्यूशन. तो आपके पास एक कलर्ड सोल्यूशन होता है. डाइल्यूट सोल्यूशंस आर ब्राइट ब्लू कलर ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. सो जो 2A ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 2A ग्रुप मेटल्स हैं, वो लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं और क्या बनाते हैं? कलर्ड सोल्यूशन. लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करके कलर्ड सोल्यूशन बनाते हैं. डाइल्यूट सोल्यूशन सब ब्राइट ब्लू कलर ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. सो ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो 2A ग्रुप मेटल्स हैं लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व होते हैं, राइट? लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व होते हैं और एक कलर्ड सोल्यूशन बनाते हैं. Dilute solutions bright blue color due to what? Solvated electrons, ammoniated electrons. So the solution decompose very slowly forming amides and involving hydrogen. अगर आप सोल्यूशन को बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ देते, जैसे कि आप लैब में गए और अल्काली मेटल को अमोनिया लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करा, उसके बाद आप क्या करें? आप फ्रेंड्स के साथ चले गए लंच करने या कॉफ़ी पीने, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सोल्यूशन ऐसी का ऐसा रह गया, और जब आप 2-3 घंटे के बाद आकर देखे तो उसमें आपको क्या मिला? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहे हैं, और गलती से आपका बर्नसन बर्नर ऑन था एंड हाइड्रोजन गैस इट कैचेस फ्लेम, राइट? सो आपकी पूरी लेबोरेटरी गई है. सो आपको क्या करना है? इसको ज़्यादा देर तक छोड़ने से एमाइड्स बना लेता है, amides and evolves hydrogen. So M give rise to M plus 2 plus 2 electron. तो 2 अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके NH2 माइनस बना के H2 गैस रिलीज होता है. दिस इज NH2 माइनस अमाइड. तो M plus 2 plus 2 NH माइनस और रिएक्ट करके MnH2 टेकन ट्वाइस बना लेता है. So it forms MnH2 माइनस. सो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जो सोल्यूशंस हैं डिकम्पोज वेरी स्लोली फॉर्मिंग अमाइड्स एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन. सो जो अमोनिया है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अमाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस. तो आपको इसको ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. इसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस. एंड it can do flames, right? It can do fires. So when the solution is evaporated, hexaammoniate MnH3 taken 6 is formed, slowly decomposed to give amides.
अगर सोल्यूशन इज इवापोरेटेड हेक्सामोनिएट MnH3 टेकन 6 टाइम्स इज फॉर्म्ड स्लोली, तो ये स्लोली बनता है और फिर ये क्या देता है, अमाइड्स, फिर से अमाइड्स देता है. So this is about the solution of alkaline earth metals in liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया में जब आप डालते हो तो क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ब्लू ब्लैक कलर, डीप ब्लू ब्लैक कलर मिलता है. तो रिएक्शन क्या होगा, एक मेटल प्लस X प्लस वाई NH3 MnH3 taken 6 times whole plus 2 इलेक्ट्रॉन्स NH3 टेकन y टाइम्स. तो ये आपका रिएक्शन है. तो इसके ऊपर +2 चार्ज और यहाँ पे माइनस. ओके, तो ये है. अगर देर तक आप इसको छोड़ देंगे तो उसमें से क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूजेस. तो अब यूजेस बात करेंगे, उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, उसके बाद बहुत है ये. और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से लास्ट टाइम लास्ट ये क्वेश्चन आया है, इसलिए अभी आ सकता है. ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप नेग्लेक्ट ना करें. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप नेग्लेक्ट ना ही करें. ओके, यूजेस. बेरिलियम इज यूज्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयज. एंड मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल माई NCERT सीरीज. इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं. तो मैं अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी. अभी हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुँचे नहीं हैं. ओके, यूजेस देखते हैं. यूजेस, तो बेरिलियम इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज. तो बेरिलियम से आप अलॉयज बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं, अलॉयज. जैसे हम लिथियम से अलॉयज बनाते थे ना, लिथियम से अलॉयज बनाते थे. कौन से अलॉयज बनाते थे लिथियम से? कौन से अलॉयज बनाते थे? लेड के साथ लिथियम को, लेड के साथ वाइट मेटल बनता था. लिथियम और लेड वाइट मेटल बनाते थे. और वो वाइट मेटल को कहाँ यूज़ करते हैं, मोटर इंजन्स के बियरिंग्स में यूज़ करते हैं. एल्यूमिनियम के साथ एयरक्राफ्ट, बिकॉज लिथियम और एल्यूमिनियम का अलॉय लाइट रहता है, तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को डिज़ाइन करने में यूज़ करते थे. विथ मैग्नीशियम, lithium with magnesium armor plates. It is used in thermonuclear reactions. Lithium is also used to make electrochemical cells. Sodium is used to make sodium lead alloy. Lead to make PbET4. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो PbET4 है वो किससे बनता है, sodium is used to make sodium lead alloy. Need to make PbET4 and PbMe4. and PbET4 का मतलब है लेड टेट्रा इथाइल लेड, एंड PbMe4 का मतलब है टेट्रा मिथाइल लेड. These organo lead compounds were earlier used as anti-knock additives to petrol. पेट्रोल में पहले डाल देते हैं ऐसे एंटी नॉकिंग, क्योंकि उसमें से बहुत आवाज़ आती है ना, तो एंटी नॉकिंग. बट अब हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करते हैं बिकॉज इट कॉज लॉस ऑफ पोल्यूशन. सो इसलिए जैसे कि आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, अगर थोड़ा सा को रिलेट कर पा रहे हैं तो बायोलॉजी में हम पढ़ते थे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि लेड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाए. क्या किया जाए, लेड का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया जाए. अब लेड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने, लेड का, डीजल का, पेट्रोल का, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस आया था. एंड इसके लिए भारत स्टेजेस निकाले थे, भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 और बहुत से स्टेजेस निकाले थे. लेट्स टॉक अबाउट नाउ लिक्विड सोडियम मेटल. सो लिक्विड सोडियम मेटल जो है कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है. पोटेशियम वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पम्प्स होता है हमारे पास, हमारे न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है. पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप. अपने टाइड का ऐड देखा होगा, तो जब लेडीज़ कपड़े धुलती है, लेकिन जब हम कपड़े धुलते हैं तो क्या होता है, कोई भी कपड़े धुलता है तो क्या होता है, हाथों पे सोप बहुत हार्ड होने की वजह से लाइंस बन जाते हैं एंड बहुत रफ हो जाते हैं हैंड्स. तो
अगर आप उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं तो सॉफ्ट सोप बन जाता है. इट इज़ यूज इन द एक्सेलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए आप पोटेशियम यूज़ कर सकते हो. सीजियम डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाना है तो आप सीजियम मेटल. फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहाँ पे काम आता है? जैसे विलेजेस में ये टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया जा रहा है. उसमें क्या होता है कि लाइक जो हर्ट होता है, हर्ट में झोपड़ी जो होती है उसके ऊपर वो लोग ये सीजियम मेटल को यूज़ करते हैं. सीजियम मेटल को रखने से क्या होता है, वो सनलाइट कैच करता है. सनलाइट कैच करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसकी वजह से करंट आता है. तो झोपड़ी में बल्ब जलता है विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट हैविंग एनी दैट मच एडवांस इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होते, पर भी ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करके उनके झोपड़ी में बल्ब्स आता है. सो दे हैव यूज द टेक्नोलॉजी अ लॉट. सो बहुत सी जगह अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगह इम्प्लीमेंट हुआ है. एंड इट्स वेरी यूजफुल एंड इट्स वेरी feasible कि in villages it is not possible to build up इलेक्ट्रिक खम्भे लगाना और पिलर्स लगाना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाना. इट्स नॉट feasible एंड इवन इट्स नॉट सेफ. बट इतना मेंटेनेंस नहीं हो पाता है. इट्स पॉसिबल बट नहीं होता है. तो ऐसे जगहों पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल बहुत काम में आता है. और क्या होता है कि बैटरीज की तरह भी यूज़ होता है. उसको क्या करते हैं कि देख, दिन में तो सनलाइट होता है, रात में क्या होता है वो चार्ज होके रहता है, और रात में फिर इसको करंट मिलता है. सो इट्स वेरी यूज़फुल एंड सीजियम मेटल बहुत यूज़फुल है. तब हम अल्कलाइन मेटल्स की डिस्कस करने के बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्कस करते हैं. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी काम के होते हैं. जैसे बेरिलियम है वो एलॉय की तरह यूज़ करते हैं. अगर आप कॉपर के साथ बेरिलियम को मिलाते हैं, कॉपर के साथ Cu के साथ, सो आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स. जैसे फिजिक्स में हम स्प्रिंग्स के प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं ना, तो अगर आपको वो स्प्रिंग बनानी है तो आपको क्या करना होगा, बेरिलियम और कॉपर लेना होगा. तो वो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में काम में आएगा. कौन? बेरिलियम और कॉपर. बेरिलियम एंड कॉपर. मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्स-रे ट्यूब्स. तो विंडोज़, घर के विंडोज़ नहीं, एक्स-रे ट्यूब्स के विंडोज़ बनाना है तो मेटेलिक बेरिलियम यूज्ड होता है एक्स-रे ट्यूब्स बनाने में. क्या बनाने में? एक्स-रे ट्यूब्स. एक्स-रे ट्यूब्स. अगर आपको एक्स-रे ट्यूब्स बनाना है, एक्स-रे ट्यूब्स के विंडोज़ बनाना है, विंडोज़ ऑफ एक्स-रे ट्यूब, तो आपको बेरिलियम मेटल यूज़ करना चाहिए. मैग्नीशियम फॉर्म्स अलॉयज विद एल्यूमिनियम. जो मैग्नीशियम है इट फॉर्म अलॉयज विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन. तो मैग्नीशियम किसके साथ अलॉय बनाता है? तो देखो, मैग्नीशियम किसके साथ अलॉय बनाता है? एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन. ओके, सो इट फॉर्म्स विद. तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसमें कौन सा एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हो, जिंक, मैग्नीज एंड टिन. तो मैग्नीशियम के साथ कौन कौन? एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज, टिन. टिन भी यूज़ करके इसका अलॉय बनता है. तो एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज, टिन. तो मैग्नीशियम और मैग्नीज Mg और Mn, राइट? ये तो याद रहना चाहिए. एल्यूमिनियम के साथ भी MgAl, जिंक के साथ भी और टिन के साथ भी. So magnesium aluminum alloy being light in mass are used in aircraft construction. Even जो आपका लिथियम है, लिथियम और एल्यूमिनियम भी एयरक्राफ्ट पार्ट्स को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत लाइट होता है. तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम भी लाइट होता है. सिंस मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लाइट होता है तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है. अब एयरप्लेन्स देखते हैं तो कौन सी कलर की होती है एयरप्लेन्स? एयरप्लेन्स वाइट होती है, राइट? तो उनका मेटल जो होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बना होता है. मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन इज़ यूज्ड इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स. तो मैग्नीशियम का पाउडर एंड रिबन में बनता है ना, इज़ यूज्ड इन द फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स.
फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स में यूज़ होता है। इंसेंडियरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स, अगर आपको बॉम्ब बनाना है, सिग्नल बनाना है, इंसेंडियरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स, तो आप मैग्नीशियम पाउडर और रिबन का यूज़ कर सकते हैं। अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, suspension of magnesium hydroxide in water called milk of magnesia used as antacid medicine। अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है तो आपको क्या करना है, मिल्क ऑफ सस्पेंशन लेना है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनेगा। इसको एंटी एसिड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कलाइन है, राइट, अल्कलाइन है और आपके पेट में HCl एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये उतना ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इसलिए हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ा था कि जो सिमेटिडीन और रैनिटिडीन है, इनको यूज़ करके एसिडिटी ट्रीट की जाती है, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन। अब हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अलग अलग यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज it's do not treat the actual problem, it just utilize the acid present in the stomach, right? Magnesium carbonate is an ingredient of toothpaste। तो जब भी आप सुबह ब्रश करें तो आपको एक मंत्र पढ़ना है, वो मंत्र से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो मंत्र क्या है कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो आपके टूथपेस्ट में क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सबके टूथपेस्ट में नमक होता होगा, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स के टूथपेस्ट में क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट, मैग्नीशियम का कार्बोनेट। मैग्नीशियम का कार्बोनेट है आपके टूथपेस्ट में, तो आपके टूथपेस्ट पे नमक है क्या, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो इसके अच्छे से याद रख लो कि टूथपेस्ट में जब भी आप टूथपेस्ट करें उससे पहले आपको एक मंत्र पढ़ना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट। Calcium is used in the extraction of metals. Calcium is used in the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है कि शायद हम मंत्र पढ़ना भूल जाएं, तो आप स्टिकी नोट्स पे आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स लेना है। स्टिकी नोट्स 10-20 रुपीज़ में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर आपको लिखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख लें। और कैल्शियम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप कैल्शियम का देखते हैं। तो जो कैल्शियम है, द कैल्शियम is used in the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon। So calcium is used in the extraction of metals from oxides which are difficult to reduce with carbon। तो कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ मेटल्स कार्बन से नफरत करते हैं, वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होना चाहते। तो क्या होता है, कैल्शियम इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स व्हिच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। तो कैल्शियम वो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करता है, इसके ऑक्साइड से मेटल को निकालता है। सो कैल्शियम इज यूज्ड इन द मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑक्साइड्स, फ्रॉम द ऑक्साइड्स, राइट। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स जो होते हैं, जो कैल्शियम होता है, जो बेरियम होता है, इनके मेटल्स ओइंग टू द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग टू द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। सो जो कैल्शियम है, बेरियम है, owing to the reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperatures have often been used to remove air from vacuum tubes। vacuum tubes है, vacuum tubes मतलब जहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो वो ट्यूब्स बनाने में क्या होता है, कैल्शियम और बेरियम को यूज़ करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बिकॉज वो हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एयर रिमूव हो जाएगा और वैक्यूम ट्यूब बन पाएगा, राइट। रेडियम्स ऑल्सो आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। अगर रेडियोथेरेपी करनी है तो रेडियम को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो रेडियम रेडियो एक्टिव है और रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम कुछ और यूज़ करते हैं। कुछ और जानने के लिए बने रहिए विद NCERT सीरीज़। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, and we'll discuss from general characteristics of compounds of alkali earth metals in the next video, and we'll complete our chapter, right? Thank you so much, keep watching, subscribe, like and share, please guys, to support my channel. Thank you.